Good morning, everybody. This is the 74th celebration of India's Independence Day. Independence Day is celebrated with huge enthusiasm and zeal across the country and is observed with flag hoisting, ceremonies, parades, and cultural events all over India. But this year, celebration will not be the same due to the ongoing coronavirus pandemic. However, we would continue to do it virtually and wish you a happy Independence Day on behalf of Baldwin Boys High School family. And we would like to tell you that a day will come where the clouds will part and the sun will shine and we come together. With that hope, shall we begin this great day with a word of prayer. Shall we pray? Loving Father, we look up to you this day and give thanks to you for our great country. We thank you for the rich heritage that we have. We thank you for all that you have given to us in this country. We are proud to be Indians. Lord, we pray for our political leaders. We pray for the prosperity of this land. We pray for your healing upon this land. We pray for the peace at the borders of our great nation. Lord, we know that you are in control. And a day will come where clouds will part and sun will shine again and we come together. We commend everything to your loving hands. In your holy name we pray. Amen. our 74th Independence Day. On this very day, on 15th August 1947, we got freedom from the British. Our national flag, the tricolour, was hosted by our Prime Minister at the Red Fort. Many great freedom fighters have given up their lives for our country. On this very day, every year, there is a grand procession held at New Delhi.
where Indian soldiers, school children and Navy and Air Force march with patriotism and respect the martyred soldiers. And then the Indian flag is hoisted. Happy Independence Day to all and stay safe. Thank you. Jai Hind. Good morning, everyone. My name is Jonathan George Matthew. I'm from UKG A. We celebrate Independence Day as the National Festival of India. The day marks our independence from the British Empire. India got independence on the 15th of August 1947. India became independent after lots of hardships and sacrifices. 15th August became a very important day in Indian history. The entire nation celebrates this day with full spirit and joy. We celebrate Independence Day to remember the lives of our brave freedom fighters. Wishing everyone a happy Independence Day. Jai Hind. Independence Day! Hi, I am orange color of our Indian flag. I stand for courage and sacrifice. Our freedom fighters showed courage and sacrifice to free India. I love my country. Jai Hind. Hello everybody, my name is Aryan Petka and I am from UKTC. Today I am going to tell you all about the color white on our national flag. White stands for purity and light. With this quality within us, we can become good citizens of our country, India. Thank you. Have a good Independence Day. All Jai Hind. I am Vian Richard. Happy Independence Day. Green band stands for prosperity and nature. Green also we present good luck. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं सैयद अमन आलम आज इस कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन ही सही पर आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज से 73 वर्ष पूर्व यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। लेकिन ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। इस आजादी के लिए भारत के कई वीर सपूतों जैसे मंगल पांडे, लाला लाजपत राय, भगत सिंह इत्यादि ने अपने प्राणों की आहुति दी थी।
उन सभी वीर सपूतों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनको नमन करता हूं। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में बड़े ही उमंग और जोश से मनाया जाता है, परंतु जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज सारा विश्व कोरोना महामारी की चपेट में है। इसी कारण हम सब विद्यार्थी भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए विद्यालय में एकत्रित ना होकर उसी उमंग और जोश के साथ अपने घरों में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द ही हम भारतीय इस महामारी से भी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे और अगले वर्ष फिर से पाठशाला में एकत्रित होकर अपना स्वतंत्रता दिवस उसी जोश, उमंग और धूमधाम से मनाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। The glorious nation that taught the world how to count celebrates independence on this momentous day, commemorating the nation's independence from the British on 15th August 1947. The Indian diaspora celebrates Independence Day around the world. In the first, the Indian tricolor has been hoisted at the iconic Times Square in New York. The story and history of our nation's independence have its roots in the sacrifices made by iconic pioneers like Gokhale, Tilak, Gandhi, Bhagat Singh and Bose. On this epoch-making day, on behalf of Bowling Boys High School, I remember and pay rich tributes to every selfless, unsung martyr who fought against the ruthless British colonial empire. In 1942, Mahatma Gandhi launched the Quit India movement with the clarion call to do or die. The narrative of India's independence not only highlights the end of the British colonial rule, but it transformed the socio-cultural landscape of our nation. The year 1947 marked the beginning of industrial age in India. The inner strength of India is deeply embedded in every Indian. Our nation has evolved into one of the fastest growing economies in the world. India's relatively young workforce, the nation's virtual monopoly over mica and thorium, high level of literacy, strong footholds across labor-intensive industries, and so forth will undoubtedly empower India to become a force to reckon with shortly. As India celebrates independence, Bowling Boys High School, founded in 1880, celebrates 140 glorious years of academic excellence. As young adults, we pledge that we shall strive for character refinement and intellectual expansion. We shall embrace the noble ideals, virtues, and morals as indispensable personality traits to accomplish individual and national goals and dreams. Happy Independence Day. Jai Hind.
बड़ा हाँ जोबा। बाहर संभाल के जाना, अंग्रेज घूम रहे होंगे। सोचा था मरने से पहले देश आजाद हो जाएगा, तिरंगा लहराता हुआ देखूंगा, लेकिन सब कुछ रह गया, सब कुछ रह गए। बाबा, देश को आज़ादी मिलके 70 साल होने को आ गए, अब फिर भूल गए। झूठ बोल रहा है तू। कहाँ है तिरंगा? कहाँ है गांधी जी का संदेशा? कहाँ है? अभी आप जरा आराम कर लो। पप्पा, कल 15 अगस्त है ना? आजोबा को नीचे झंडा वंदन के लिए लेके चले। डॉक्टर ने उनको हिलने से मना किया है, नीचे कैसे लेके जाएंगे उनको? सो दिस इज मिरर। जब लाइट मिरर पर पड़ती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है। इसका मतलब अगर रोहन यहाँ खड़ा है तो इस मिरर में उसका रिफ्लेक्शन यहाँ दिखाई देगा, और रोहन यहाँ से थोड़ा यहाँ आया तो उसकी इमेज मिरर में थोड़ी सी आगे दिखाई देगी। पता चला? क्या पता चला? जारी कर दिए जाने की आशा है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने पिछले साल नवंबर में सैनिकों के लिए हाँ बाबा। फ्रिज में से आइसक्रीम निकालेगा तो मार खाएगा। नहीं बाबा, मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा है। को लागू करने इधर देख, सामने आईने में देख। 488,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण फ्रिज बंद कर दे। उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि 40 माइक्रोन की मोटाई से कम की झंडियों और बैनरों जैसी चुनावी प्रचार सामग्री पर प्रतिबंध लगा हुआ है। मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल की अध्यक्षता में एक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही खंडपीठ ने हलफनामे में और जो एंगल बनता है यहाँ पे उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। पढ़ाई करने से ही अंग्रेजों का मुकाबला कर सकोगे तुम। पढ़ाई कर, पढ़ाई। है on the eve of our 74th Independence Day. This is a happy and emotional day for all children of Mother India, whether living, working at home, outside or abroad. On this day, we remember the sacrifices made by our freedom fighters, political leaders and citizens in order to free the motherland. Independence Day becomes another opportunity to reflect on the value of vigilance,
the price we pay for any semblance of freedom. 15th of August this year comes in the midst of a pandemic, an economic depression, but it calls for a national reckoning to remain optimistic, and focusing on the goal in any given situation is of paramount importance. A positive approach always goes a long way in transforming distressing times into opportunities, adversities into triggers of development and progress. This Independence Day not only commemorates India's successful overthrow of the colonial rulers in 1947 on this day, but as a nation we witness and salute the medical personnel for giving it all they have to save lives amidst a raging pandemic. We are indebted to the Corona warriors for their noble service in the fight against the coronavirus pandemic. I urge you all to take a pledge of freedom from the pandemic this Independence Day. So let us abide, respect and follow the safety and precautionary measures given to us. Above all, pray for one another for safety and health, and thank God for placing us in this great nation, India, as free citizens. Take a resolve for a self-reliant India, a resolve to learn and teach something new, and a resolve to earnestly carry out our duties. Wish you all a happy and safe Independence Day, and God bless. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണೆಯ ശുഭാശയಗಳು. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസകൾ. नमस्ते, आपको और आपके समस्त परिवार वालों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. మీ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు పఠాన్ మొహమ్మద్ రయాన్. నేను 7వ తరగతి చదువుతున్నాను. నా స్కూల్ పేరు బాల్డ్విన్స్ బాయ్స్ హై స్కూల్. నేను లాక్డౌన్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నాను. మీ అందరికీ నా తరపున స్వతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు. మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ మై सिटीजन्स ऑफ इंडिया. जय हिंद. नमस्ते, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. नमस्ते, मी महाराष्ट्राच्या आहे. शौर्य स्वातंत्र्य दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. वनक्कम, सुगंधिर नलवाळ्तुक्कल. जय हिंद. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे.